अच्छा। ठीक है, तो और जैसे ही ये आपके, एवरीवन, हाय सर। हाय हाय। हेलो सर, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। क्या भाई, आधी जनता तो आज ज्वाइन ही नहीं करी। काफी कम लोग हैं आज, एक हाँ, 6 लोग हैं। अगर लोग ज्वाइन नहीं करेंगे तो फिर वेबिनार करने का फायदा क्या। ऐसे ही कॉल सी दे देता हूँ। सर कोर्स की डेट क्या है, प्राइस एक्शन वाला? 5 मार्च। एंड रफली टाइम क्या होगा? और उसने यार दोपहर में यही टाइम करी रखेंगे, 2-3 बजे। देखते हैं, टाइम दो विल तीन डिसाइड अलॉन्ग विद पीपल। ठीक है। Sir, do you give calls mostly on the Learn to Trade group or the webinar discussion group? No, so whatever calls are given on the Learn to Trade group, they will automatically get reflected in the webinar discussion group. Okay, so even if we just open if we open Learn to Trade, so 100% calls will come over there, right? Be it a stock call, index call, anything. Yeah, everything. Okay, got it. That Thank is just for discussion. Just Okay, so on webinar discussion, we are also allowed to participate, whereas Learn to Trade is just your messages. yes. Okay, got it. Let me be clear with people. Because एफर्ट लेने का फायदा नहीं। मैं चाहता हूँ लोग सीखें, लोगों को नहीं सीखना है तो I will also roam around ना यार। Why do webinars? Good. चलो then let's dive in. सर आप जब कॉल्स देते हैं इंट्राडे में या फिर अ, मतलब पोजिशनली सही, बट लाइक बाय बैंक निफ्टी एट 37,650, सेल इज 37,630 लाइक दैट, तो लाइक आपने मतलब कुछ स्पेसिफिकली मेंशन नहीं किया, तो वी कैन टेक एज पर आवर चॉइस कि ये ऑप्शन लेना है, फ्यूचर्स खरीदना नहीं है। सर, फ्यूचर और ये सारे इट्स लेवल्स, मैं सारे लेवल्स स्टॉक्स के, इंडेक्स के लेवल्स देता हूँ, फ्यूचर्स के नहीं देता हूँ। ओके ओके, अगर ऑप्शन होगा तो आप स्पेसिफिकली बोलेंगे? यस, ऑप्शन का देखोगे अगर ग्रुप में तो स्पेसिफिकली मेंशन है कौन सा ऑप्शन लेना है, कितने पे लेना है। ओके, whenever option is there I will mention it, else it is always future. Okay, but the price that is mentioned is not a futures price but the spot price. Spot price, I understand. Yes. Okay. Okay. Anyway, chalo, let's begin. देखो लास्ट वीक जैसा हमने प्रेडिक्ट किया था, मार्केट एक्चुअली टोटली followed the same. Okay, nothing different happened. Now let's see what is the outlook for next week. सर एक छोटा क्वेश्चन था। सर जो अपना प्राइस एक्शन का जो कोर्स हो रहा है वो मैं अटेंड नहीं कर पाऊंगा क्योंकि अभी मेरे को बहुत ट्रैवल करने का ये वीक और नेक्स्ट वीक, तो वो अवेलेबल होगा ना बाद में वेबिनार पे देखने, उस पे वेबसाइट पे देखने के लिए? हाँ, वेबसाइट पे अवेलेबल होगा, लेकिन देखो, like I mentioned, those who will register for the course, they will obviously have free access to it lifetime. Those who are quarterly subscription या more than that, annual भी हैं जो लोग, they will also have access to that free of cost. Apart from that, you will have to purchase it, and if you don't, then
once I upload it, the price will be more. It will not be the same, which I'm kept it right now. हाँ ठीक है सर, बस अवेलेबल है ना, बस और कुछ उसका नहीं। रीजन भी है, उसका रीजन ये होता है, क्या होता है कि पीपल डू स्क्रीन रिकॉर्डिंग्स एंड ऑल, तो जब वेबसाइट पे अपलोड करना पड़ता है तो you have to make sure that people cannot do the screen recording, sell it here and there, तो उसके लिए अलग कॉस्ट लगता है, उसके लिए अलग सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है जो कि पर व्यू होता है, that's why the cost goes up, that is the reason. पहली बार जो कर रहा हूँ, since it is first time, that's why it is less, but once it is uploaded on website the cost will go up, similar to like our other courses. जब करा था तो 2,500 फीस था, अभी ज्यादा है क्योंकि cause of the security features. Anyway, so क्या लग रहा है guys, यूएस में क्या होगा? Any view, anyone, any idea क्या चल रहा है मार्केट में? वहां पे तो सेलिंग ही चालू है यूएस में तो अभी आगे क्या होगा? जो हो चुका है उससे क्या मतलब? अभी ये नीचे का जो जोन है वो टेस्ट करने के लिए आ रहा है, वहां पे क्या करेगा वो अपने को देखना पड़ेगा। बहुत बार बाउंस दे चुका है वहां पे ऑलरेडी। देखो टेस्ट कर चुके हैं ऑलरेडी एंड देन इट हैज बाउंस्ड. ओके, this has already been tested. If you see, US market has already tested the last week's low. So last week हमने जब, yeah, This is श्री सीमेंट का है ना ये? this is weekly chart. Okay, of S&P 500. So US market सीमेंट का है सर, चार्ट श्री सीमेंट का ही है. अच्छा लगा नहीं अभी, सॉरी. हाँ, तो जो यूएस मार्केट है, देखो ये हमारा लो था, ठीक है, एंड इट हैज ऑलरेडी टेस्टेड इट. ओके, दिस इज द डिमांड जोन. सो मैक्स वी कैन एक्सपेक्ट दिस यूएस मार्केट, लाइक हम लास्ट वीक एक्सपेक्ट किया था कि इस वीक में हमें वीकनेस दिखेगी. वी सॉ द वीकनेस एंड दिस विल कंटिन्यू. ओके, सो इस वीक में भी यू कैन एक्सपेक्ट द वीकनेस, बट दिस इज इट. मतलब आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग इट टू गो बिलो दिस. नाउ इफ इट गोज बिलो दिस देन विल हैव टू रिविजिट एंड सी कि उसके बाद क्या करना है. Okay, but as of now the view will remain the same as last week. It looks bearish. Okay, and any break of last week's low will cause or trigger another sell-off which might take it to the recent low. Recent swing low ये आपका है 42.14 पे. That is where it should come before we see any kind of a move. But at the same time, जो last week का high है, if that high gets taken out, then you can assume, then in that case, what will happen? A higher top, higher bottom will be confirmed. Then you can start expecting that this down move is now over and now up move will continue. Okay, so view remains negative, but at the same time, last week's high remains your stop loss for your negative bias. Okay, so that's the view on US market. अगर यूएस में और भी इंडाइसेस देखो, नास्डैक देख लो, नास्डैक में वेरी सिमिलर, ठीक है, ये लास्ट वीक का स्विंग लो है which should be get tested this week. So on this also the view will remain negative. फिर डाउ जोन्स कहाँ गया? ये रहा डाउ जोन्स आपका. डाउ जोन्स में वेरी सिमिलर, ठीक है, ये डिमांड जोन है और ये आपका स्विंग लो है, ठीक है. तो इसमें भी यही दिख रहा है कि this might get tested, and so that's why this also looks negative. There is no bullishness at all in the US market as of now. यूरोप अगर देखो, again you saw there was a big buying from this demand zone as we expected last week, but that buying faded later and we closed almost closer to the low. So this also remains negative, but the important thing is in this German market is it is sideways. So this is not a place where one should look to sell. Instead, this is a place one should look to buy. So almost looks like कि ये थोड़ा अगर नीचे जाता भी है, that should be an opportunity to buy. Okay, but since overall outlook is negative, I'm not keeping it as a buy, but instead, sideways to upward. So that will be the view on German market. ठीक है. UK देखो, रिजेक्शन फ्रॉम द, ये साइडवेज मूव है, इसका रिजेक्शन ऊपर से मिला है, सो ऑब्वियसली इट विल कंप्लीट द फुल, ठीक है. सो अगेन इसमें क्लियर कट नेगेटिव सेंटीमेंट है एंड इट शुड गो डाउन. टॉप 50 यूरो स्टॉक्स देखो, वेरी सिमिलर, कंटिन्यूअस डाउन मूव. All the opens are lower than the previous one almost, and all the closes are lower than the previous one.
So again, very clear cut downward move. काफी volatile है, but end of the day, the thing is कि it is negative. So on this also, view remains negative. एशिया में अगर देखो आप, Hang Seng, so last week we expected this कि अगर इसके ऊपर जाता है तो ऊपर जाएगा, but it did not go above last week's high. Instead it reversed. Okay, this one reversed, but अभी इसको तुरंत you cannot say a sell. It will be a sell only. So ये देखो, ये जो इसके पहले वाले green candle है, जब तक इसका low taken out is not taken out, तब तक this will remain in a sideways movement. If this gets taken out, in that case the view becomes negative. Okay, similarly if the high gets taken out previous week का, not last week का, उसके पहले वाले week का, then it becomes bullish. Okay, since overall market texture is negative, chances are high, probability is high that the low will be taken out and then it will continue its move in the downward direction and should minimum achieve this much before bouncing, and then again it can continue to fall further. Okay, so view on this Hang Seng will also remain negative for this week. China ने देखो ये लो बनाया था, which was our demand zone. ठीक है, we expected it to go up, it continued, it went up, but the same time this is the range which is still within this range. Okay, so on China the view will remain sideways, nothing has changed. It might just continue being up down, but a clear cut movement will come only if it starts breaking previous week का high and a previous week का low. जो ये आपका एक दोजी बना है, ठीक है, इसको मैं दोजी बोलता हूँ, नॉर्मली बुक्स में इसको दोजी नहीं बोलते, बट फॉर मी इट इज अ दोजी. ओके, व्हाई आई विल एक्सप्लेन ऑल दीस थिंग्स इन द कोर्स. ओके, बट दिस इज दोजी फॉर मी. ठीक है, निकेई अगर देखो, सो निकेई सम went down last week. उसके बाद क्या हुआ था, हमने सोचा था ये ऊपर आएगा, it went up also. फिर उसके बाद after trapping so many people, this week again just come down, but still you see a higher high. Okay, and plus buying was seen from these levels. So Nikkei maybe as of now the view remains very, sideways kind of, not a very clear cut view. Last week का high और last week का low, जिधर डायरेक्शन में आपका ब्रेकआउट होगा, that will be the direction in which Nikkei will move. Okay, this will keep on the sideways side. Okay, so overall if you see the market, nothing is bullish. Either it is clear cut down or it is sideways. Okay, nothing is clearly bullish. So overall the texture that you understand from the market right now is that bearishness is still existing and should continue to exist in this last week of February. Okay, डॉलर इंडेक्स देखो, so डॉलर इंडेक्स भी अभी अगर आप देखोगे तो क्या कर रहा है, इट इज इन दिस चैनल. ओके, एंड चैनल इज जस्ट लाइक ए रेंज, ट्रेडिंग रेंज. चैनल के हमेशा नीचे वाले साइड पे बाई करना होता है, ऊपर वाले साइड पे सेल करना होता है. ठीक है, यहाँ पे बाई किया हुआ है हमने, अब ये ऊपर जा रहा है एंड इट शुड टेस्ट द अपर एंड ऑफ द चैनल बिफोर इट एक्चुअली फॉल्स डाउन. सो डॉलर का आउटलुक जो है, दैट आल्सो लुक्स वेरी बुलिश, एंड इफ डॉलर इज बुलिश our equity markets will continue to suffer. But at the same time, डॉलर में it is important कि अगर इसको bullishness continue रखनी है तो it breaks last week high. If it doesn't break last week high, the bullishness will not continue. It might just be sideways. Okay, so looking at the texture and price action, I'll be bullish on dollar. But if I have to buy dollar actually, say मैंने अगर नहीं खरीदा है, मुझे अगर खरीदना हो डॉलर, तो I will not buy now. I will buy only if it is breaks last week's high. Yeah, बाकी ये दोनों छोड़ दो, का भी कोई मतलब नहीं है. तो क्रूड देखते हैं. क्रूड में बताओ क्या हो रहा है, एनीवन? वॉर की वजह से इन्फ्लेशन हो रहा है इसके अंदर, इसीलिए अभी साइडवेज है. हाँ एग्जैक्टली, इट इज साइडवेज. इसमें कुछ ट्रेंड नहीं है अभी, ना ऊपर ना नीचे, इट इज जस्ट साइडवेज. जिधर साइड में आपको ब्रेकआउट मिलेगा, या तो लास्ट वीक के हाई के ऊपर निकल जाए, लास्ट वीक के लो के नीचे निकल जाए, दैट विल बी योर
डायरेक्शन। सर जब आपको ऐसी दो कैंडल्स दिखती हैं जैसे क्रूड की लास्ट टू हैं, तो आप इन दोनों को कंबाइन करके फिर बोलते हो ना रेंज है ऊपर और हाँ नीचे। एग्जैक्टली, आप कंबाइन करके देखोगे तो पूरा रेंज है यहाँ से हाँ लेके यहाँ मतलब तक। लास्ट टू कैंडल्स को एक इफ यू लुक एट इट एज वन कैंडल तो Yeah, उसके ऊपर और नीचे जब मूवमेंट आएगा तब ट्रेड बनता exactly, because right now it is just sideways. Okay, है। नीचे बाई हो रहा है, ऊपर सेल हो रहा है, that is the range क्रूड में। तो जब तक इसके ऊपर नहीं निकलता या जब तक इसके नीचे नहीं जाता तब तक there is no trade, it is just sideways. Okay, so crude is not giving you a very clear cut indication, which is very right. It is only cause of the war thing that it went up and then war वाली बात खत्म हुई तो फिर नीचे आ गया। So as of now क्रूड में कोई ट्रिगर नहीं है। Similarly गोल्ड देखो, तो गोल्ड एज वी एक्सपेक्टेड, हम ये हमारा गोल्ड का कंसोलिडेशन हो रहा था वेज में, ब्रेकआउट दिया, वाज ए बाई, went up, now it has given a breakout above this line also. This was supposed to be a place where it should have got some rejection, but it has not given any kind of rejection. Now whether we should buy or not, so buying should come only above last week high. अगर last week high के ऊपर जाता है गोल्ड, then only a buy should come. But होता क्या है कि मोस्ट ऑफ द टाइम अ ब्रेकआउट इज फेक। 80% 90% ऑफ टाइम ब्रेकआउट फेक ही होता है, तो हाई चांसेस कि ये रिवर्स हो rather than it continues. ओके, सो अभी अगर देखते हैं सेटअप तो इट लुक्स बुलिश। ओके, सो आई विल नॉट go back and say कि नहीं let's go ahead and sell it because there is no evidence as of now. But be very careful. Being bullish doesn't mean you will buy here. You will buy only if it breaks last week's high. Yeah, there has to be a good follow through. If the breakout is correct, the follow through should be also nice. If there is not a good follow through, that means the breakout will mostly be a false breakout. Okay, so that's why be cautious on gold. And if you have to buy gold, buy only if it breaks last week's high. Else don't buy it because it might just happen that ये sideways में under करे and then it falls. Yeah, and breakout में कोई traction ना हो आगे. So that's one thing. ठीक है, gold हो गया, crude हो गया, बाकी एल्यूमिनियम का वो छोड़ दो ये सब। देखो निकेई का जो येन का चार्ट देखो, वेरी सिमिलर टू निकेई। निकेई में ऑलमोस्ट लग रहा था जैसे कि बॉटम इज ऑलरेडी फॉर्म्ड। ओके, एंड इफ यू सी निकेई वाज one of the indices which was showing sideways, not very clearly bearish. Same chart you can see here on this yen pair. Yen is also not a very clear cut buy signal, not a very clear cut sell signal, and like this I have marked it, unless and until it goes below this or above this, it is just a sideways market. Okay, now the overall trend is down. Okay, so chances or probability will be higher that it breaks the low this side first, and if something like that happens then you go short. But still, looking at this chart, you can only say that this is sideways. You cannot actually say it is bearish as of now. Okay, euro USD देखो, now this is something which is clear cut bearish, no doubt about it, very clearly bearish. And this is also something very much in line with आपका देखो यूके का चार्ट क्लियर कट बेरिश था, आपको करेंसी भी उसके दिख रही है कि क्लियर कट बेरिश है। यूएसडी आईएनआर देखो, यूएसडी आईएनआर में अगर आप देखते हो तो दिस इज जस्ट साइडवेज स्टिल। ओके, अगेन दिस इज नॉट समथिंग, बस इसमें रेंज आपकी थोड़ी बड़ी हो गई है, दिस इज द रेंज बट दिस इज स्टिल साइडवेज, it is not a trend. Okay, on a shorter time frame you can feel that there is a trend, but overall picture is कि ये sideways है, ये up move हुआ, ये sideways है, and then again now from here it should again go. That's how it looks like, and which is very much in line with dollar. डॉलर ऊपर जाएगा तो ये ऊपर जाएगा। ठीक है, so this I will keep it as bullish because it is at the lower range. And now a buying should come on dollar, and that's selling should continue on the rupee, and that will move this higher and will move down our market. Yeah, pound USD clear cut bearish higher, ऊपर का ये रेंज है आपका, यहाँ से सेलिंग मिली है आपको क्लियरली। ठीक है, clearly this is where is again line with like UK chart which already saw. Okay,
सो अब अभी तक देख के वो ग्लोबल आउटलुक क्या समझ में आ रहा है? गोल्ड पॉजिटिव, डॉलर पॉजिटिव, इंडाइसेस नेगेटिव, राइट? करेंसी इज नेगेटिव, which is very much showing that bearishness is going to stay at least for this week. Okay, there is nothing which points at a reversal or weakening of trend or anything like that. The only thing is that you have to be cautious in terms of entering your trades because we are already at the very lower extreme. So you have to time your trades properly. But अगर buy लेना है या sell लेना है इसमें decide करना हो, better to sell. The probability of being successful in a shorting will be much greater than if you buy it. Okay, because the overall market texture is negative. ठीक है? So this is the global outlook. Any question, anyone? कोई डाउट है किसी को? कुछ भी पूछना है? सर मुझे एक क्वेश्चन था. हम्म So sir, if you're saying it's currently negative, at what point do you think in the middle of the week or something does it start changing, or how do we get to know that it's really negative? So what are the confirmation signals to confirm our view or to show that we are going wrong? So आपको कैसे लगेगा चेंज हो रहा है? चेंज हुआ जब जैसे इसका देखो, ये अगर इसके ऊपर चला जाए, ठीक है, सब में लास्ट वीक का हाई जो अगर तुम्हारा ब्रेक हो जाए तो समझ लो गलत है, होगा नहीं वो, ठीक है। तो सर मतलब वो वीकली आउटलुक के लिए चेंज वेट करना होगा, जब तक वो वीक के रेंज के अंदर है तब तक वीक ही रहेगा. हाँ, बट वीकली चेंज तो आपका मंडे को भी हो सकता है ना, मंडे को भी पूरा मूव आ जाए. हाँ करेक्ट. हाँ जी, You don't have to wait until Friday for that. Yes, correct. Yeah. So if it goes above on Monday itself, sir, but so then we can confirm that it is the outlook has changed if it happens. Of Yes. course, chances come. Yes, definitely. Yeah. Got it. But see, it will not happen because that's the reason we look at so many things. It cannot happen that all of them suddenly change. मतलब Correct. उसके लिए चाहिए कि मतलब सारे बैंक्स आके, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आके, हर जगह, हर मार्केट, हर इकोनॉमी में दे स्टार्ट बाइंग स्टॉक्स राइट, लेफ्ट एंड सेंटर, तभी ऐसा होगा, which is highly unlikely. Right. Yeah. Right. Anyway, anyone, any other question anyone has? सर इसका क्रिप्टो पे कोई इम्पैक्ट आएगा क्या? क्रिप्टो गिरेगा ना यार, चालू तो हो गया, मैं देख रहा था. क्रिप्टो तो कब से गिर ही रहा है. हमने बीच में जब बाई दिया था उसके बाद वो बढ़ा, फिर जब इधर सेल दिया तो वो गिरना शुरू हो गया, फिर वो गिरेगा, अभी फिर वो 25-30-40% गिरेगा. Anyway, let's start with our local market then. Now निफ्टी देखते हैं, निफ्टी में क्या चल रहा है. So guys, निफ्टी में जैसे हमारा लॉन्ग टर्म टारगेट तो ऑलरेडी पहले से है पता. क्या है हमारा लॉन्ग टर्म टारगेट निफ्टी में? 16,000. 16,100. हाँ, 16,100 हमारा टारगेट है, ठीक है. अराउंड समवेयर अराउंड दिस इज आवर टारगेट 16,100 का. ये हमारा पहला फॉल था जो हमने कैप्चर किया था, ये हमसे मिस हो गया था, इसमें हमने एक्चुअली लॉस भी किया था इसमें, ठीक है. फाइनली जाकर रिकवर किया, फिर ये हमने पूरा कैप्चर किया, ठीक है. नाउ विल कंटिन्यू, यही 16,100 तक जाना चाहिए इसको. अब एज ऑफ नाउ अगर देखो तो ये निफ्टी में डिमांड जोन है, राइट. दिस इज द डिमांड जोन जहां से निफ्टी ने कई बार सपोर्ट लिया है. ओके, सिमिलरली अगर मैं डेली चार्ट पे देखूं, अगर डेली चार्ट पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको एक क्लियर कट ट्रेंड लाइन आपको एक दिख जाएगी जिस पे फॉल हो रहा है. यहीं पे हम बार बार सेल कर रहे थे एंड विद मेकिंग मनी. फ्राइडे को भी हुआ, फ्राइडे क्लोजिंग रेड में नहीं हुआ, ओके. बट स्टिल द व्यू इज क्लियरली नेगेटिव. ओके, ये आपका एक तरह से एक्सपैंडिंग फ्लैट है, सॉरी एक्सपैंडिंग वेज है. अगर आप देखो तो ये आपका वेज बन रहा है, ठीक है. दिस इज द एक्सपैंडिंग वेज जिसमें, और ये एक्सपैंडिंग ट्रायंगल बोल लो जो बोलना है, इसमें ए बी सी डी हो गया, अब एक ई आना चाहिए. ओके, अब
and after that you might see कि ये जब हो जाएगा then you might see the up move starting, which will then be the final up move, which will take it higher than the this level 18,600 के ऊपर जाएगा फिर इसके बाद. So that's the view on Nifty. Nifty still the view is clearly negative. Okay, we are already short on Nifty. Will continue to remain short. Those who want to enter now, अब उनको क्या करना है? उनको वही लास्ट वीक का जो लो है उसके नीचे, बिकॉज द ट्रेंड इज डाउन, उसके नीचे अगर जाता है देन दे कैन शॉर्ट ऑन दैट पर्टिकुलर 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट जो भी कैंडल है उस पर शॉर्ट करने का, जब भी लास्ट वीक के लो से नीचे जाए. ठीक है, एंड वहाँ शॉर्ट करके आप वो 5 10 15 मिनट कैंडल का जो भी हाई होगा उस पर आपको स्टॉप लॉस डालना है. ठीक है, सिमिलरली से अगर ऊपर जाता है वापस ट्रेंड लाइन को टच करता है, सो अगेन वी विल वेट फॉर ए फेलियर ऑफ दिस, एंड अगर ट्रेंड लाइन टच करता है फेल होता है तो अगेन वी कैन ऐड ऑन टू आवर शॉर्ट. जो जिनके पास है, जिनके पास नहीं है दे कैन एंटर ऑन देयर टू एंड क्रिएट न्यू शॉर्ट्स जैसे ये ट्रेंड लाइन पे जाता है. सिमिलरली exit कब करना है? only if we see a close above this trend line, and that I'll anyway update on the group also. ठीक है, but just telling you guys exit होंगे तब कब, जब हम ये जो ट्रेंड लाइन के ऊपर या तो हमें बढ़िया ब्रेकआउट मिले. ठीक है, बढ़िया क्या होता है वो leave it for the course, will explain what does that mean. ओके, एंड या तो ये जो हमारा हाई बना है रिसेंट, क्या है ये 17,485 या 17,500 मान लो, 17,500 के या तो ऊपर चला जाए निफ्टी, तब वी विल सरेंडर और शॉर्ट्स. ओके, एंड दैट केस विल सरेंडर और शॉर्ट्स. और नहीं तो इफ वी सी अ गुड ब्रेकआउट ऑफ दिस ट्रेंड लाइन एंड I see a follow through also, that's when we will surrender our shorts. Okay, so Nifty as of now the view remains bearish, but I hope everyone is clear when to initiate a new trade. जिनका already है they can keep carrying, but जिनके पास नहीं है they have to go short. I hope they are clear with how you have to enter the shorts. Any doubts? Yes, sir. वापस एक क्वेश्चन था, आपने बोला that those who don't have shorts, the moment it breaks last week lows, you wait for a 15-minute candle, and if it sustains, then immediately go short, right? हाँ, that depends on how you trade. Okay, अब तुम 5 मिनट कैंडल पे ट्रेड करते हो, 10 मिनट पे ट्रेड करते हो, 15 मिनट, that depends. अब उसमें डिफरेंस क्या होता है? डिफरेंस आता है आपके रिस्क रिवॉर्ड में प्लस प्रोबेबिलिटी पे. 15 मिनट कैंडल पे क्लोजिंग नीचे आती है तो दैट्स अ मोर गुड, इट्स अ बेटर प्रोबेबिलिटी देन ए 5 मिनट. बट एट द सेम टाइम 15 मिनट कैंडल पे जो तुम्हारा स्टॉप लॉस होगा इट माइट बी हायर देन योर 5 मिनट. So you will have to take that call on the way you trade. Do you want to take short on the 5-minute candle or a 15 or a hourly or a daily? Yeah, that depends on your totally your risk appetite. And the stop loss will be the high of that candle. Yeah, that particular candle. Whichever candle you take. Yes. उसका भी closing ना सर, जैसे आप बताते हो live trading में. Yes. Okay, got it. Yeah, but अब देखो, जैसे फॉर एग्जांपल hourly chart ले रहे हो. Yes. 150 पॉइंट की कैंडल है तो उसमें अब तुम 150 पॉइंट के लिए ना वेट करो क्लोजिंग का, क्योंकि इट माइट आल्सो हैपन कि 150 की जगह 300 हो जाए. राइट, सो क्लोजिंग पे ही चीजें करनी चाहिए, बट देयर इज ऑलवेज अ लिमिट. राइट, मतलब एक अपना मेंटल लिमिट होना चाहिए ना. मान लो फॉर एग्जांपल ये देखो, ये यहाँ तक देखो बैंक निफ्टी में, इफ यू सी फ्रॉम दिस कैंडल टू दिस कैंडल, सॉरी निफ्टी में आर्ली चार्ट में, दिस इज द वॉलेटिलिटी. राइट, दिस इज द आर्ली मूवमेंट ऑफ निफ्टी. सो अकॉर्डिंगली मान लो यहाँ पे मैंने फॉर एग्जांपल जस्ट फॉर द सेक ऑफ कि यहाँ पे एक नेगेटिव कैंडल देख के मैंने यहाँ पे इसके नीचे गया, मैंने शॉर्ट लिया. राइट, सो आई विल से कि चलो आई विल कीप अ स्टॉप लॉस अबव दिस. ठीक है, बट मान लो क्लोज के ऊपर, अब ये जब कैंडल फॉर्म हो रही है, अब इसकी ये तो ऊपर जाता जा रहा है, तो आई विल नॉट वेट फॉर द क्लोज ना इन दैट केस, बिकॉज ये तो कितना ऊपर तक जाऊंगा. राइट, करेक्ट. तो इन दैट केस ऑब्वियसली आई विल हैव सम मेंटल स्टॉप लॉस इन माइंड कि हाँ भाई मैं 5,000 से ज्यादा लॉस नहीं कर सकता, डिपेंडिंग ऑन माय कैपिटल रिस्क एपेटाइट व्हाटएवर ऑल दोस थिंग्स. एंड इफ दैट इज रीजन आई विल बी लाइक ठीक है, गलत है ट्रेड, निकल जाओ. ठीक है, तो सी ट्रेडिंग इज डायनेमिक, देयर इज नो वन साइज फिट फॉर ऑल. ओके, एंड यू हैव टू मेक योर ओन decisions at times. And that's why I always say you need to focus on learning if you have to make money, because any advisor in the world cannot make money for you unless and until that person trades himself on your money.
जब तक वो नहीं है, no one can make money for you because everyone's risk appetite is different, way of trading is different, capital is different. So sometimes if you learn things, you will be able to make those adjustments and make certain smart decisions which will change your overall profitability. So it's not a पत्थर पे लगी, it's a good practice that yeah you should wait for the close. For example जैसे ये है, तुमने यहाँ पर शॉर्ट लिया, अब तुम कैंडल क्लोज का वेट नहीं करते तो तुम यहाँ निकल गए होते लॉस में, वेट किया तो यू वुड हैव Right. कंटिन्यूड, यू वुड हैव मेड गुड मनी. बट एट द सेम टाइम यहाँ पे जब तुम शॉर्ट हो ऊपर आ रहा है तो इट डजंट मीन कि यू हैव टू वेट अंटिल हियर, यू हैव टू बी स्मार्ट कि हाँ बस हो गया भाई, यहाँ से यहाँ पे मैंने शॉर्ट किया था ऑलरेडी, यहाँ पे आ गया है, कम से कम 50% तो पैसा लेके जाऊं मैं, राइट? Correct. Right, sir. दोज आर द डिसीजंस यू हैव टू टेक, नो वन कैन टेल यू दैट. Got it. Anyway, so anyone, any questions? सर अभी आपने निफ्टी में जो एक वो बनाया एक्सपेंडेड वेज, राइट? हाँ इसमें अगर आप अर्ली जो आपने बोला, इसमें एक फ्लैग एंड पुल टाइप भी बन रहा है फ्रॉम बुलिश पॉइंट ऑफ व्यू. हाँ बन रहा है. हाँ, तो अगर मेरा ये फ्लैग के लो पे क्लोजिंग देता है विद अ गुड कैंडल, इज वहां एंट्री नहीं ले सकते इंस्टेड ऑफ वेटिंग रख फॉर सकते हो 16 क्योंकि 8? इसमें देखो अभी तुम्हारा, अब वही है ना तुम्हारे आउटलुक पे कि तुम कितनी देर के लिए ट्रेड ले रहे हो. तुम हाँ इंट्राडे मतलब अगर ट्रेड ले रहे हो अगर, तो ये तुम्हारा देखो ये अर्ली में ऐसा बन रहा एग्जैक्टली है. मैंने यही बनाया हुआ है हाँ तो पूरा तुम एक, यहाँ पे खरीदो, यहाँ पे बेचो, बट इसका ठीक. लिमिट यही है, इसका लिमिट फिर ये नहीं है, राइट? एंड नहीं, मेरा ये पॉइंट, ओवरऑल अगर देखो तो ये क्या है, ट्रेंड डाउनवर्ड ही है, हाँ मतलब राइट? फॉलिंग चैनल टाइप है. अब प्लस ये तुम्हारा दिख रहा है कि ये दिस इज एन एक्सपैंडिंग वेज, सो हाई चांसेस ये हैं कि देयर माइट बी ब्रेक डाउन होगा ना. ब्रेकआउट, हाँ ब्रेकआउट इन द लोअर साइड व्हिच विल टेक इट डाउन rather than it goes up. ठीक है, so it नहीं, might आई वाज also जस्ट happen you get आस्किंग trapped here ट्रैप्ड इन in व्हाट the वे, sense लाइक कि यहाँ अगर मैं पे वहां अच्छी से लॉन्ग कैंडल जाऊं, दिखी, you buy here seeing a very good candle and then you see a breakdown, ब्रेक डाउन हो जाए क्योंकि right? लार्जर ट्रेंड तो बेरिश है ना. हाँ exactly. हाँ, सो सर आई वाज जस्ट आस्किंग ना, जैसे लास्ट वीक का लो इज आल्सो अ डिमांड जोन, जैसे 16,800 के आसपास वहीं से Yeah, बाउंस मारा है. yeah, तो इंस्टेड ऑफ वेटिंग फॉर दैट, अगर यहाँ पे डिसेंट कैंडल बनता है, यहाँ पे भी शायद एंट्री बन सकती है ना. कहाँ पर, यहाँ पर राइट है ना. हाँ, ब्रेक डाउन कंटेक्स्ट की बात देखो कर ना, रहा हूँ. सी ऑलवेज सी द कंटेक्स्ट ऑफ द मार्केट. दिस इज अ डिमांड जोन, ओके क्लियरली, ठीक है, यू आर करेक्ट हियर, but the context of the market is clearly bullish, bearish, okay? And at the same time this is a big selling, it has come early में भी देखो तो this is the channel which it is following, okay? overall larger trend में भी it is down, so context के हिसाब से you should position yourself on the sell side rather than the buy side. फॉर श्योर, तो मतलब इस वीक में जहाँ वीकनेस दिखे वहां सेल करना है, उसके अलावा ट्रेड नहीं एग्जैक्टली लेना. तो अब यहाँ पे जैसे तुम बोल सकते हो कि हाँ ये तो सपोर्ट है, बट सपोर्ट क्या काम करेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ द सपोर्ट वर्किंग इज लेस बिकॉज द ओवरऑल कंटेक्स्ट इज नेगेटिव. वीक है, ठीक है, ठीक है. यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस होता तो उसकी इंपॉर्टेंस ज्यादा होती बिकॉज इट विल वर्क बेटर. गॉट इट. तो आइडियली तो जैसे चैनल के अभी जो आपने बनाया है, टॉप पे अगर रिवर्ट सही बैठा तुम शॉर्ट चले हाँ जाओ, यहाँ क्योंकि पे फिर अगर मान लो अगर जैसे फॉर एग्जांपल मंडे को गैप अप ओपन हो जाए, यहाँ पे आपको मिलता है, हाँ अब जो कि इजीली आ सकता है, इट्स अ गुड ट्रैप, हाँ ओके, हाँ एंड देन इट विल आल्सो मेक दिस डिमांड जोन वर्क, ओके. So you might get a opening here 17,340 के आसपास, okay? The first 5 minutes you see a weakness, sell it with day high as the stop loss, or if not that, better stop loss is for previous day वाला डाल के सेल करो, कम से कम मिनिमम यहाँ का तो रखो इस, और अगर ये हाँ, ब्रेक हो मतलब जाता अगर है दो तो लॉट है, एक लॉट बेस पे बुक कर लिया, दूसरे का ब्रेक डाउन हो जाता तो ले जाओ, कैरी हाँ कर. एक यहाँ पे रख दो जो तुम्हारा डिमांड जोन है, और उसका अगर वो ब्रेक होता है तो सीधे नीचे वाला चैनल ये भी ब्रेक हो जाता है, देन कीप ट्रेलिंग अंटिल हियर, हाँ, राइट? फिर 16,800 तक तो जाना ही या चाहिए फिर. एग्जैक्टली यहाँ तक तो आएगी, यहाँ तक तो कुछ नहीं है. ठीक है, गॉट इट, थैंक्स. बट आर वी एक्सपेक्टिंग गैप अप हो सकता है मंडे के दिन? That you cannot expect. गैप अप और गैप डाउन होगा नहीं होगा वो उस पर दिमागी, देखो हर चीज मार्केट में नहीं पता लगा सकते हो ना यार, ठीक है, वो पता नहीं, वो आई डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग, आई डोंट नो, क्या वो होगा देखा जाएगा, ठीक है, बट वो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो. आई डोंट नो हाउ समटाइम्स पीपल से
but that is very difficult यार. और वो सही मायनों में गैम्बलिंग होता है, मार्केट में गैप अप और गैप डाउन पे प्ले करना. कैसे पता कर सकते हो कि गैप अप होगा गैप डाउन होगा? राइट, लाइक दिस इज गैप अप गैप डाउन कैसे होता है? एनीवन हैज एनी आइडिया? वो पहले 15 मिनट की ट्रेडिंग में क्या होती है? तो बिड्स होते हैं, मतलब वो तो 9 पूरे to दिन 9, बिड और आस्क होता है. नहीं नहीं मतलब 9 to 9-7 में के बीच के टाइम पे तुम अपना ऑर्डर प्लेस करते हो, उस हिसाब से जो तुम्हारा एवरेज बनता है ऑफ सारे ऑर्डर्स, उस हिसाब से गैप अप या गैप डाउन होता है. हाँ, वो एवरेज वैल्यू होती है. एग्जैक्टली. हाँ दैट इज नॉट transacted or real trade value. That's just an average of buys and sells. So it's very difficult to find out. Who cannot say कि gap up होगा कि gap down होगा. हम लोग कैसे पता करते हैं? बोल देते कल gap up होगा कल gap down होगा. Cannot say. Very difficult. Anyway, चलो बैंक निफ्टी देखते हैं. तो निफ्टी everyone is clear, right? What we have to do, how we have to do. Anyone has any doubt? चलो good. तो guys, बैंक निफ्टी में क्या चल रहा है? Anyone would like to explain? सर ब्रॉडर पे तो इट लुक्स लाइक लोअर टॉप फॉर्मेशन, तो अभी सेलिंग आनी चाहिए इसके अंदर काफी. Okay. Anyone else? सर, सेइंग द डॉलर इंडेक्स, जैसे आपने बोला यू आर एक्सपेक्टिंग बाउंस, तो फिर उस पे नहीं. सर रेंज बाउंड. हाँ, yes, it's range bound clearly. क्योंकि नीचे आया, ऊपर गया बाउंस होके, इस ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा था, इसको ब्रेक किया, बट स्टिल इफ यू सी दिस इज द रेंज. This is the range. The range might be big, but this is the range where you have to buy here. Every time you have to buy here, and every time you have to sell closer to this. That's how it is working. And unless and until you see a break below this or a close above this and a follow through. Okay, because this is a weekly chart. So obviously on an hourly or a 5-minute candle, if you see a breakout or a breakdown, you should also see a follow through. Else it will become something like this, and again it will come down. Okay, so bank nifty is clearly sideways. Okay, now so इसमें like I said, last week भी हमने सिर्फ intraday trades लिए. इस week भी bank nifty में we will focus only on intraday. We will still not take any positional trades. ठीक है, because the outlook is very clearly sideways. Okay, unless and until we see it breaking beyond this range, either upward or downward, our view will be to just take intraday trades. Intraday में नीचे का मिलता है नीचे सेल करेंगे, ऊपर मिलता है ऊपर करेंगे, बट अभी कोई पोजिशनल ट्रेड इसमें नहीं लेना है. लाइक निफ्टी इज वेरी क्लियर, बैंक निफ्टी में अभी देयर इज नो क्लैरिटी. ओके, इट माइट आल्सो हैपन कि निफ्टी गिर के 16,100 चली जाए, बैंक निफ्टी ऊपर नीचे करती रहे, एंड देन इट स्टार्ट्स गोइंग अपवर्ड फॉलोइंग दिस अप मूव, साइडवेज मूव अपवर्ड. ठीक है, so let's see. ठीक है, also if you see from Elliott wave count also, if you see A, B, C is also done, very much possible कि starts going up also. ठीक है, so bank nifty में will take only intraday trades, will not take any kind of positional or swing trade as of now. एक हमने जो बीच में लिया था, we have already booked 400-500 point profit, निकल गए, and that was here only. हमने लिया, यहाँ पे बुक किया, अब निकल गया, and this was the reason to book because ये लोअर एंड पे था. दैट्स व्हाई आई आस्क्ड यू गाइस टू बुक दैट. अब वेट करना है, फिर इस वीक देखते हैं, इंट्राडे ही मोस्टली ट्रेड्स लेंगे. ठीक है, नो पोजिशनल ट्रेड्स येट इन बैंक निफ्टी. एनीवन एनी डाउट्स? सर वो एक क्वेश्चन था, आई मीन मे बी नॉट रिलेटेड टू दिस वीक. लास्ट वीक ऐसे हुआ था कि बैंक निफ्टी थोड़ा सा मूवमेंट दिखा रहा था, निफ्टी वाज नॉट शोइंग एनी साइंस. बैंक निफ्टी में इतना मूवमेंट क्यों था? ये मुझे भी नहीं पता. देखो सभी ट्रेडिंग में या लाइफ में कोई भी चीज ना उतने जानना चाहिए जितने से काम हो जाए. अब जैसे एग्री
अभी मैं तुम्हें एग्जांपल बता रहा हूँ, मैं कॉलेज से निकला and I was not the topper. Okay, I joined Shell, making good money, doing trading, all those things, making good. There were my friends who were like good toppers, 9.9, 10, पूरे पढ़ाकू, PhD कर रहे हैं, 10-12 पेपर लेके पोस्ट डॉक कर रहे हैं, कहाँ यूनिवर्सिटीज में, कैलिफोर्निया, MIT, इधर उधर, अभी तक वो पढ़ा ही रहे हैं या पेपर ही लिख रहे हैं. आई एम नॉट सेइंग कि देयर वर्क इज नॉट गुड, बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि in order to be successful in life, you don't need to know everything. You need to just know what is important and what helps you. And bank nifty क्यों गिरा, निफ्टी क्यों नहीं गिरा, who cares? मुझे बस इतने से मतलब है कि जब वो गिर रहा है तो I am able to identify कि हाँ वो गिर रहा है, and then I buy. क्यों गिर रहा है इससे क्या मतलब है? वो HDFC बैंक जाके पूरा बेच रहा है, कोई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बेच रही है, LIC बेच रही है, डोंट गिव अ शिट. Whoever is selling, I should just know कि हाँ गिर रहा है, and I should be able to capture it. Okay, so and I'm not saying this because you asked the wrong question or something. What I'm trying to say is कि focus on things which matter. ज्ञान नहीं अर्जित करना है हमें खूब सारा, जिसका यूज नहीं. पेपर थोड़ा ना लिखना है हमें, PhD तो करनी नहीं है, ठीक है, बुक लिखना नहीं है, पैसे बनाने हैं. तो your question is right, but it will not help you. And knowing it कि क्यों गिर रहा है is also not going to help you in any way, right? And the more things, अब जैसे indicators ही देख लो. I don't like indicators for the very fact there are so many indicators. The moment you start using indicators, what happens? You actually lose focus of what is happening on the price. You only keep looking at the indicators. 10 इंडिकेटर है, कोई कुछ बोले, कोई कुछ बोला, and you get confused. इंफॉर्मेशन उतनी ही होनी चाहिए जिससे आप कंफ्यूज ना हो पाओ, आप बस एक सिंपल डिडक्शंस कर पाओ. पर जब बहुत सारा डेटा डंप कर दिया जाएगा, you will not be able to make sense of anything, right? So your question is right, but it is not going to help you in any way, and that's why I don't know, because I never tried to know. Yeah, that was never going to help me. ठीक है. इसका the reason I asked this question is because discuss about NMDC one of the stocks कि go up, but वो नहीं गया जब बाकी इंडेक्सेस थे. मतलब I was thinking कि वो जाना चाहिए था based on our discussions also, but strange reason वो नहीं गया. Anyway, जब वो NMDC आएगा तब देख लेंगे चार्ट. अभी देख लेते हैं ना. NMDC में लास्ट वीक का हाई जाना था, तब उसको ऊपर जाना था. जहां तक मुझे याद है वो नहीं गया था. Where is NMDC? Metals. NMDC का देखो ट्रिगर लगा, कभी ट्रिगर ही नहीं हुआ, क्यों ऊपर जाएगा? It never got triggered. Why will it go up? Right? This was the discussion, right? Clearly. Ki if it goes above last week's high, you will buy. It never got triggered. In fact, what got triggered was the low. Last week low went and it should have got short. And you would have made good money then. Right. Okay. Anyway, chalo, koi nahi. Just be careful, and whatever I say, मैं बहुत सोच समझ के बोलता हूँ. Whatever I say. So focus on that, and कुछ ना समझ में आए, ask me again. Don't make any assumptions. Sure. Thank you. Now it's more likely to bounce back. NMDC. What are you saying? वो NMDC का NMDC के टाइम पे देखते हैं. ठीक है. This was just to clarify. But anyway, so finance, if you see guys, Nifty finance. Anyone, what is happening here? Can anyone say anything? कोई view है? So ये भी रेंज बाउंड ही है. नहीं, ये रेंज बाउंड नहीं बोलूंगा मैं. इसमें क्या हुआ है ना, आपका रेंज एक्सटेंड हुआ है. हाँ, वो जो हमारा पिछले पहले आपका रेंज ये था, ठीक है. But now there is a new range. See, I'll tell you one thing, guys. A trending market can have many ranges, you know.
because market always works like this. For example, अब जैसे यही देख लो, even if a big, larger chart I'll open, this is, now you can see the range clearly, right? Similarly, यहाँ पे क्या हुआ है फाइनेंस में, ये है एक ट्रेंड में, डाउन ट्रेंड है, क्लियर कट, ठीक है, दिस इज इन ए क्लियर कट डाउन ट्रेंड, बट इंपॉर्टेंट क्या है, डाउन ट्रेंड में 1 2 3 मूव हो चुके हैं, ठीक है, 2 स्विंग हो चुके हैं, एंड दैट्स व्हाई द व्यू शुड मोस्टली गो अप, ओके, बट इट इज, दिस होल ट्रेंड इज क्लियरली डाउन ट्रेंड. अगर मुझे लाइन बनाना हो, this is the line, so it is downtrend, there is no, it is not sideways, okay. Now weekly में अगर मुझे देखना है, तो ये मुझे दिख रहा था कि ये एक मूव डाउन हुआ, ऊपर गया, 2 मूव डाउन हो गए, और ये दूसरे मूव में भी 1 2 हो गया. Now it is going up, now it has made higher top, this was the range. Chances are that if this high goes, you start going up instead of, and if this low goes, then you start going down. But अब इसमें सीन क्या है, I don't like shorting on a green candle and buying on a red candle. So for me, if this high will go, last Friday का जो अगर high है, if that goes, I will look to go long. But at the same time, अगर Friday का low goes, I will not take short because it's still a green candle. And उसका low अगर गया, I will not take short because chances will be more that it gets reversed. Okay? सर आप ये कह रहे हो वीकली कैंडल अगर ये जैसे daily है. ग्रीन हो, अच्छा डेली, हाँ ये डेली कैंडल है, ठीक है, फ्राइडे का है, तो फ्राइडे का हाई के ऊपर जाता है, आई विल गो लॉन्ग, बट फ्राइडे का अगर लो के नीचे आता है, आई विल नॉट शॉर्ट, एंड आई विल गो शॉर्ट ओनली इफ दिस गेट्स टेकन आउट. इफ दिस गेट्स टेकन आउट, देन आई विल लुक टू गो शॉर्ट. और से मंडे का कैंडल रेड बनता है, ट्यूसडे को रेड कैंडल के नीचे वापस फॉलो थ्रू होता है, देन आई विल गो शॉर्ट. ओके, बट अभी लुकिंग एट दिस, since this is a green candle and it is also closed way more than 50% of it, I will go long if this high breaks, okay, but I will not go short if the low breaks, okay. अब देखो इसमें एक और चीज, ये आपको दिख रहा है डेली चार्ट पे, ये क्लियर कट ट्रेंड दिख रहा है, या सो अगर ये लो ब्रेक होता है तो देयर आर हाई चांसेस कि इट हैज अ फॉलो थ्रू. सो हाउ यू विल कैप्चर दैट ट्रेड, ये हम बात कर रहे हैं डेली चार्ट का, राइट. जो ब्रेकडाउन होगा वो आपका 5 मिनट 15 मिनट में होगा, ठीक है, जो आप 5 मिनट 15 मिनट में देखोगा, वो 5 मिनट जो कैंडल है दैट कैन बी रेड, गेटिंग माय पॉइंट. जो 5 मिनट जब यहाँ पे ब्रेकडाउन होता है, दैट 5 मिनट कैंडल कैन बी रेड, राइट. यस. तो उसके नीचे अगर मुझे मिलता है फॉलो थ्रू, आई विल बाय शॉर्ट इट. ओके, in that case the only thing I'll have to look at is कि I have to be quick in terms of seeing that there is, follow through is happening. If there is no follow through, I should exit, okay, because at the same time अगर इसको आप देखो, अर्ली बनाता हूँ आपको और थोड़ा क्लियर दिखेगा, इसमें एक चैनल है, निफ्टी में भी ऐसे ही बन रहा है. हाँ एग्जैक्टली. तो ये आपका जो बन रहा है, तो इसलिए यहाँ पे सीन क्या क्या, अब देखो अर्ली में क्लियरली ये रेड कैंडल है, इसके अगर नीचे आता है लुक टू गो शॉर्ट, बट देन इट माइट हैपन कि वो यहाँ से रिवर्स कर जाए, ठीक है, एंड दैट्स व्हाई यू हैव टू बी क्विक इन दैट सेंस. जैसे हमारा निफ्टी में था, लाइक यू सेड, ठीक है, निफ्टी में भी वही है कि पहला आप टारगेट यहाँ रखोगे, सिमिलरली फाइनेंस में भी यही, पहला टारगेट ये रखोगे अगर शॉर्ट करते हो, बट अगर इसके नीचे गया देन दिस विल बी योर टारगेट. So very similar. So now you see your trading style, definition, way of trading, everything changes a lot when you change the time frame. Okay, in every time frame, the moment you change the time frame, your trading outlook changes. But overall, just to summarize, Nifty Finance also, if you see, it is clearly negative. Okay, and you should look to sell it for a target of this low. Okay, and your stop loss remains आपका ये फ्राइडे का हाई. If फ्राइडे का हाई goes, then
higher top higher low बन जाता है, you look to buy and your target will be this. But in case the low breaks, you should look to sell with a stop loss here. Okay, risk reward, like I explained, you have to see in which candle, which time frame you are selling. Accordingly, you will have to keep your stop losses. ठीक है? So this सर will, yeah. सॉरी, एक बार इसके वीकली पे जाओगे प्लीज, फाइनेंस के क्या चीज? एक बार इसके वीकली टाइम फ्रेम पे जाओ प्लीज। Okay. सर इसमें जस्ट प्राइस एक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन था मेरे को, जैसे आपने कहा कि रेंज एक्सटेंड हुआ है, राइट? यू सेड दैट सीइंग द कैंडल कि उसका विक कितना बड़ा है, अगर इसमें वही फॉलो थ्रू आता, ग्रीन कैंडल नहीं होती और क्लोजिंग इसके नीचे होती, तब आप कहते ब्रेक डाउन हुआ है ना रेंज का। हाँ, अगर ये नीचे अगर क्लोजिंग देता तो मैं आई वुड हैव कंटिन्यूड सेलिंग। हाँ, तो बेसिकली रेंज बाउंड पॉइंट ऑफ व्यू से जहाँ जितनी बड़ी विक्स होती है उतना एक वो हो जाता है कि ये रेंज में है। हाँ, ऑब्वियसली वो रेंज ही हो गया ना, नीचे से बाई वो ऊपर वो बीच में तो बंद हुआ है। मतलब एक्चुअली हाँ बायर्स मतलब एंड सेलर्स आर बोथ आर ओके, इन इक्वल पावर, देयर इज नो वन ठीक है, साइड व्हिच इज स्ट्रांग हियर, राइट? अभी भी रेंज में ही बंद हुआ, पॉइंट बिंग दैट ना हाँ, उसका सो वो वीकली लेवल पे अगर हाँ। देखो तो इट्स ऑलमोस्ट लाइक, एंड दैट्स व्हाई आई सेड कि यू हैव टू बी कॉशियस, यू कैन नॉट जस्ट आउटराइट गो एंड सेल इट। ओके, यू हैव टू वेट फॉर इट, ईदर यू सेल इफ दिस गोज, ये जो बना है आपका हाँ चैनल, इसके नीचे ब्रेक डाउन हो, then you sell, or either you buy above this, okay, or either you sell here, ठीक है, वहां and वीकनेस buy देखिए here। तो टॉप पे। हाँ, तो वेरी क्लियरली क्या है कि ब्रेकआउट होता है तो यू बाय, ठीक है। सिमिलरली नीचे क्या है, चैनल का ब्रेकडाउन होता है तो यू सेल, ठीक है। बट ब्रेकआउट फेल होता है यू सेल, नीचे ब्रेकडाउन फेल होता है यू बाय, बाय, ठीक ठीक है। नाउ यू विल हैव टू सी, सो राइट नाउ ऑन है। दिस you cannot have a clear cut view, okay, and which is very evident by the weekly candle। weekly candle से clearly दिख रहा है कि कोई एक side is not very strong, you know कि हाँ overall trend is negative, but looking at this candle you know very well कि हाँ जब तक इस range में है you will have to take decisions on lower time frame, you cannot look at this weekly chart and make a decision जैसे कि यहाँ पे था या यहाँ पे था, ठीक है। so this will keep in sideways very similar to bank nifty again, ठीक है। so bank nifty finance almost सेम ही चीज होती है। फिर आईटी देखते हैं। हाँ जी, क्या चल रहा है आईटी में? आईटी लग रहा made a है low, ब्रेकडाउन। went up, ठीक है, falling but not very convincingly, falling but not, every time it goes up people sell it, but then there, अगर ओपन भी नीचे होता है तो क्लोज भी ऊपर ही हो जाता है, तो दो people are selling on this trend line, it is also not falling, it is again just like others, it is in this channel, so again you cannot right away say if it is positive or negative, you will need to wait for a breakout breakdown, जब तक नहीं होता तब तक ये इस रेंज में है, इस लाइन पे बाई करो, इस लाइन पे सेल करो, इस लाइन पे बाई करो, इस लाइन पे सेल करो, ओके। सो राइट नाउ अब देखो ओवरऑल ट्रेंड क्या है, स्टिल नेगेटिव, राइट। मतलब अगर मंडे को यहाँ पे खुलता है तो बिना सोचे समझे दिमाग लगाए यू सेल इट, मंडे को यहाँ पे खुलता है बिना सोचे समझे दिमाग लगाए यू बाय, ओके। बट ओवरऑल ट्रेंड इज नेगेटिव, ओके, ओवरऑल ट्रेंड इज नेगेटिव, सो द आइडिया इज कि ऊपर वाली लाइन पे अगर आपको कभी भी मिले तो यू शुड लुक टू सेल, ओके, यू शुड लुक टू सेल, बट एट द सेम टाइम अगर कोई ब्रेकआउट होता है दैट एनीवे आई विल अपडेट यू गाइस। So on IT also I'll just keep it sideways because this is in this channel and you have to just use this channel to buy and sell, ठीक है। फिर और कौन सा बड़ा सेक्टर है हमारा, ऑटो और एफएमसीजी। एफएमसीजी लाइक लास्ट वीक एक्सपेक्टेड ये नीचे टेस्ट होगा ऊपर आएगा, एग्जैक्टली दैट्स हाउ इट पैंड आउट, ओके, टेस्टेड द डिमांड जोन, वेंट अप, ओके। नाउ व्हाट नेक्स्ट, एनीवन, एनी क्लू? ट्रेंड लाइन ब्रेक करने का वेट करना है खाली।
अब अगर जिन्होंने लॉन्ग लिया है लास्ट वीक as discussed they can continue holding until this line and then sell it here. एक बार ये वापस यहाँ पहुंच गया then again we'll have to see, ठीक है, कि ब्रेकआउट आता है या फेलियर होता है। फेलियर होता है शॉर्ट करने का, ब्रेकआउट होगा बाई करने का। सो लेट्स सी। तो यहाँ तक तो मिनिमम जा रहा है, उसके बाद क्या करता है दैट वी डोंट नो। सो एज ऑफ नाउ this will be a buy above last week high. Okay, so this will be a buy above last week high. अगर last week का high जो है उसके ऊपर जाता है तो FMCG will become a buy. Okay, so keep in mind, I'm not saying FMCG is a buy. I'm saying FMCG is a buy only above last week's high. Okay, फिर metals. अरे भगवान। So metal is in this range. इस range में अब यहाँ से जर्नी शुरू कर चुका है तो mostly it should touch this. Okay, but do you need to go ahead and sell it right now? No, you will sell only if it closes below last week's low. But ये काफी बड़ा रेंज हो जाएगा, तो थोड़ा देखते हैं डेली चार्ट पे। can we find anything? Yes, we can actually. So बस फ्राइडे के लो पे अगर नीचे जाता है sell it. Okay, फ्राइडे लो के नीचे metals become a sell. Clear cut sell below Friday low. ठीक है, फिर अपना क्या है, ऑटो। ऑटो इज वेरी क्लियर, फ्राइडे लो के नीचे इसको सेल करना है। ऑटोज आर आल्सो सेल बिलो फ्राइडे लो। ठीक है, क्लियर कट डाउन व्हाट मूवमेंट है। वीकली खोल नहीं रहा हूँ बट दिख रहा होगा, दिस इज द मूवमेंट। ठीक है, यहाँ से ट्रेंड लाइन से इसने वापस रिजेक्शन लिया है, शुड सेल इट एंड दिस शुड बी आवर टारगेट लोअर रेंज। ठीक है, सो यहाँ से मिनिमम शुड कम हियर, ये हमारा डिमांड जोन है। यहाँ से वापस इट कैन ऑब्वियसली गो अप। ठीक है, बट एज ऑफ नाउ इट इज सेल बिलो फ्राइडे लो। फिर है मीडिया, वेरी सिमिलर चार्ट, सिमिलर कहानी, सिमिलर केल। फ्राइडे लो के नीचे सेल, नॉट एक्सप्लेनिंग इट, वेरी क्लियर। रियलिटी अगेन सेम कहानी, फ्राइडे लो के नीचे सेल। फार्मा, फार्मा थोड़ा इंटरेस्टिंग है। फार्मा डायरेक्टली यू कैन नॉट सेल बिलो फ्राइडे लो बिकॉज फ्राइडे लो इफ यू सी इज काइंड ऑफ कोइंसाइडिंग विद this particular low and this whole thing is part of this parallel channel. So pharma में अगर ये लो जाता है, it doesn't mean you will go and sell because your risk reward will not be good. Okay, because it is following this channel and it might happen it just only comes hit here then again reverses for this. Okay, so pharma में you have to buy or sell on this particular line and not just on the break of Friday long. ठीक है, so this one I'll keep sideways. ठीक है, clear? Any questions guys on any of the sectors? कोई डाउट? ओवरऑल सब सेल है, तो एफएमसीजी इज हाँ, ओनली मतलब बाई कुछ नहीं है एफएमसीजी को छोड़ के, एंड एफएमसीजी आल्सो कंडीशनल बाई। ओके, ऊपर से इसका भी अगर डेली चार्ट देखो तो मेरे को लगता नहीं है ये हाई जाएगा, तो मोस्टली इट विल बिकम अ सेल ओनली। ओके, बिकॉज ये अगर देखो तो पोल है, ये उसका फ्लैग है, इसका कंसोलिडेशन चल रहा है। फ्लैग एंड पोल में नीचे का पार्ट जाता है तो नीचे जाता है, ऊपर का जाता है ऊपर जाता है। ऊपर मुझे लग नहीं रहा है कि जाने वाला है, मोस्टली नीचे ही जाएगा, बट जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट आई पुट इट एज बाय कि यहाँ शायद ऊपर जाए लुकिंग एट दिस कैंडल, बट मोस्टली चांसेस आर कि नहीं जाएगा। ठीक है, सो गाइस एनी क्वेश्चन ऑन एनी ऑफ द इंडाइसेस? वी आर गुड। चलो फिर अब 10 मिनट ब्रेक लेते हैं एंड 4:15 पे विल मीट। ठीक है, एंड देन विल डिस्कस स्टॉक्स। ओके, चलो गाइस, लेट्स मीट इन 10 मिनट्स। बाय।
You guys, everyone is back. Hopefully. Everyone is back. Yes, sir. Hello. Let's begin. Yes, sir, we are back. Good. छोड़ दे, इसमें कुछ नहीं है. Coforge will continue to remain sell. Okay. Keep trailing and Coforge. Still a sell. Okay. And anyone who wants to enter now can enter below Friday low. LTI is also a sell below Friday low. दोनों दो सेल कॉल्स हैं इस बार. नए जो ले सकते हैं, बाकी जो पहले के हैं keep trailing and accordingly you guys trade. Yeah. Sir, a question tha. I've just joined from today. So, sir, can you just check charts of TCS because of the buyback news? Any signal or anything that you're getting from there? नहीं यार, कुछ नहीं है. चेक तो किया. Nothing is there. See, all the events, everything is there in the price. You don't need to know news. क्या है buyback की क्या है? It doesn't matter. Whatever is there, it will be here. Keep it very simple. All that you need to see on a chart is price. That's it. बाकी कुछ नहीं चाहिए. Okay, and it is not a buy. ठीक है. Yeah. Yeah. Vedanta is a sell, guys, below Friday low. This is also a sell. ये last week भी मैंने sell बोला था. इसमें काफी अच्छे पैसे बने हैं. Okay, this was a very good selling opportunity. Came. Good money has been made in this. I told you guys I had already shorted this one. This is still a sell. But अब देखो यार, इसमें अब एक problem ये है ना कि इसने इस लाइन के ऊपर ब्रेकआउट दिया था, वापस it has come and tested it. Okay, so unless if it goes below this, it is a sell. But you have to be cautious in sense कि if there is no follow through, you should be quick enough to exit it also, because ये range था, upper range, lower range, and it is now at the lower range. Okay, so if it goes below it, it becomes a sell because you will see a very big down move. Then in that case, up to 100. Okay, but at the same time, if there is no follow through, a reversal can come and it will again go back to 130. Okay, so with this caveat, look to sell. Okay, only if you are quick, not for everyone. Only people who can spend some time on charts should do that. Rest people just avoid it. It is not a simple sell कि करके भूल जाओ. Okay, in fact all the metals are like that. Even Vedanta is also the same. Okay, it's just near
this low and this is kind of a demand zone. So again इस वेदांता में भी same scene है कि अगर Friday low के नीचे आता है, it is a sell, but at the same time you'll have to have a realistic expectation in terms of target. Okay, your first target will be this 359, मतलब 5 रुपए का बस target है. Okay, so trade accordingly. Same is with sale. Sale is also a sell below Friday low, but then again your expectation will be only 2 points. So it is a sell, but I don't know like how many of you. So metals, my guys, there is not a good sell. All these I am giving sell, but these are not very good sell. NMDC also, you see, this is just near this trend line. It is also a sell below Friday low, but then expectation should only be this line. Only if it continues to fall below this, then you can expect it to come here. Okay. So this is also a sell, but again, not a very good sell. Like LTI Coforge was a very good sell, but these are metal stocks are not a very good sell. They are sell, but not a very good one. You have to be quick, else avoid it. Nalco is a good. एक और sorry, yeah, sir, आप जब बोल रहे हो that these metal stocks are sell below Friday's low, so again that same logic, ना, that if it goes below Friday low with one candle 15 or 5, हाँ same logic. correct, ठीक है sir. तो वही है ना, अब जैसे देखो नेशनल एल्यूमिनियम में जैसे मैंने बोला, if it goes below this you sell. Okay, now this is your kind of a demand zone. ये तुम्हारा पूरा यहाँ 113 से. Yes. ठीक है. अब मान लो तुम्हारा 5 मिनट कैंडल ही 3 रुपए की है स्टॉप लॉस, तो इन दैट केस यू डोंट सेल बिकॉज योर रिस्क रिवॉर्ड इज नॉट गुड. 3 रुपए का रिस्क लेके 2 रुपए का टारगेट रखने का कोई मतलब नहीं बनता है. करेक्ट. ठीक है. Similarly, Hindalco is also a sell, guys. Below Hindalco is a good sell. You can sell it. Okay, इसमें अच्छा खासा ये 519 10 पॉइंट है, इसमें बन सकता है easily. So this is something which you can look to sell with 1-2 rupees stop loss. तो बढ़िया 1:5 1:3 का risk reward मिल जाएगा intraday में. Hindalco will be sell below Friday. Below Friday low. Yeah. JSW very सारे सेम है यार, सब में ऑलमोस्ट सेम चीज है. It's only about finding the right trade and finding a right entry. Yeah. That is it. Leave it. Even JSW you can sell, but up to you guys. Yeah, I'll actually avoid metals. Okay, unless you have time to focus on charts, don't sell metals. Okay, I'm giving sell because they are sell. I will all trade also in many of them, but for you all, trade only if you have time to look at the charts for an hour, 2 hour. Else leave these metal stocks. Balkrishna, clear cut sell below Friday low. Bharti. Bharti is also a sell below Friday low. Okay, target will be 676. Amara is also sell below Friday low. M&M is also sell below Friday low. These stocks are good to be sold. TVS definitely sell below Friday low. TVS will be a very good sell. You can get all this point 593 तक. बहुत अच्छा risk reward है. Definitely sell this TVS. If it goes below Friday low, sell TVS. Okay. Target क्या रहेगा उसका?
Target will be this one. 590. Okay. 590. Second thing, वो Mahindra and Mahindra, is it a good for our portfolio? Yeah, Mahindra is also good for selling. No, Portfolio के लिए अभी रुक जाओ. We have Okay. already created portfolio. We'll again add to it. एक बार निफ्टी 16,100 जाए. या तो 16,100 जाए या क्लियर हो जाए कि नहीं अब ऊपर ही जाना है. Good. So TVS Motors, you said it's sell below Friday for a target of around 629, na? 590. First 590. target you can keep here 630, but overall it should go there. फिर अगर हम TVS का वीकली देखेंगे तो फिर उससे भी ये पता चलता है रेंज बाउंड है ना? हाँ, it's clearly दिख रहा है ना रेंज, नीचे ये ऊपर ही. हाँ, तो उस हिसाब से 630 का फर्स्ट टारगेट रख सकते हैं जो भी. हाँ, क्योंकि ये दिस इज द लोअर रेंज ना, वो दिख और रहा है इसके नीचे clearly. जाएगा तो फिर और नीचे का 590 जो आपने बोला था. Yes. टाटा मोटर इज ऑल्सो सेल बिलो फ्राइडे लो. ये भी देखो, अगर तुम देखोगे तो ये रेंज है इसका 470 से 510. दिस इज ऑल्सो सेल बिलो फ्राइडे लो. Same with Maruti, but Maruti छोड़ दो. It's because it's very volatile, range is big, so high chances your stop loss will get hit if you sell or buy whatever you do. So that's why Hero. इसको छोड़ दो, ये भी sell है, but leave it. Yeah. So these are auto stocks are good. You can actually take many good trades are there. You can take any of them. Banks में मिलेगा नहीं क्योंकि बैंक निफ्टी sideways है. Mostly you will not get any trades, which is very evident here. You can see not get any trades. बैंक में कोई ट्रेड नहीं मिलेगा स्टॉक्स में. यहाँ पे पीएनबी में सेल कर सकते हो, इट्स ऑलरेडी वेरी क्लोज. अप टू यू गाइस कैन सेल बिलो फ्राइडे लो, बट या मतलब आई विल नॉट एक्चुअली बी वेरी इंक्लाइंड एंड आई डोंट इवन लाइक ट्रेडिंग इन पीएनबी. सर एक क्वेश्चन था that assuming it's a like आप जो बता रहे हो everything sell below Friday's low, assuming it's a gap down and then you have to wait for a recovery close to Friday's low, right? So that the risk reward is favorable. हाँ, तो सी अब देखो, मान लो गैप डाउन होता है. लेट्स टेक वन एग्जांपल एनी ऑफ दैट. मान लो you see a gap down. Say it opens here. Okay? Say it opens here. So it doesn't mean you will put a sell order here. Because in that case, it might happen that you move, then it is already done. Okay. It might very well happen that it goes here, goes past it and goes here. Okay. So in that case, you will not put a sell order. In that case, once it reaches Friday low, you will have to see what it is doing there. Is it now failing? If it is failing, then yeah, you sell. Okay. If it is not failing, then leave it. Okay, so you wait for price action at that point. Exactly, obviously, because see, whatever we are doing right now is based on what we are seeing right now. Yeah. Tomorrow, what will happen if there is something which is different? Then
what we are seeing today, then obviously this will not be something basis which you will take trade, no? Whatever more information you'll get, you trade based on that more information. Correct. Got it. हाँ, तो कल को मान लो बैंक ये M&M खुलता है 852 पे, right? In that case, I'll be looking, हाँ ठीक है 852 पे खुला है फ्राइडे लो के ऊपर, and then वो लो के नीचे आने लगता है, sell it. तो फिर ऑलरेडी यहाँ पे ओपन होता है, high chances I look to go long instead of going short. अच्छा, why long, sir? I mean, I'm just saying it depends on the risk reward. ना मान लो यहाँ पे खुलता है, and if I see a follow through on the upper side after this gap down, obviously I look to go long because I'll be looking at कि हाँ ये gap fill होगा, right? Correct. So you give a lot of emphasis to gap filling, na? It's my first Gap session. has to be filled always. Gap should be filled always. Gap is a price point जहाँ पे there is no transaction that has happened, which means there is no equilibrium, and market always tries to come back at equilibrium. So there will always be a filling. Right. But it can take any amount of time, right? Yeah, Not it necessarily. can take any amount of time. That totally depends on momentum. Correct. So लूपिन में हमारा शॉर्ट था, विल कंटिन्यू टू रिमेन शॉर्ट. लूपिन सोचो हमने यहाँ शॉर्ट किया था 970 770 पे आ गए, 200 पॉइंट ऑलरेडी बन चुके हैं. कंटिन्यू ऑन दिस शॉर्ट, देखो पूरे महीने में कहाँ तक गिरता है. Okay, and those who want, they can also take a new short below Friday low again. Okay, so the lupin will continue short. I don't think किसी ने इतने लंबे तक lupin hold भी किया होगा. Most of you exit very soon. तो ठीक है. हाँ सर, कितना 40 पॉइंट्स पे एग्जिट हो गए थे. 40, हाँ इज गुड, बट डिडंट रियलाइज कि ये इतना गिरेगा. इसीलिए ट्रेड करना चाहिए. बट वो भी होता है, एक और प्रॉब्लम ये है ना कि लाइक इफ यू हैव वन लॉट टू लॉट, ऑब्वियसली इट्स गुड दैट यू एग्जिट इन 40-50 पॉइंट, बिकॉज़ उससे ज्यादा एक्सपेक्ट भी नहीं करना चाहिए यार. अच्छा पैसा बना था. हाँ, प्रीवियसली यही होता है कि ठीक है इतना हो गया, ओके नाउ इनफ. दैट्स हाउ यू शुड ट्रेड आल्सो. आई एम एबल टू होल्ड क्योंकि मैं खरीदता ही हूँ 10 लॉट 20 लॉट, सो मेरे लिए थोड़ा इजी हो जाता है इन सेंस कि 10 लॉट खरीदा है, 5 लॉट निकाल लिया, फिर 5 में से 3 निकाल लिया, फिर 3 में से 2, सो मेरा मूव में बड़ा कैप्चर कर पाता हूँ. बट ऑब्वियसली मैं भी अगर एक लॉट रखता तो नहीं हो पाता, क्योंकि तुम ट्रेल करोगे तो हिट तो हो ही जाता है ट्रेलिंग एसेट. एनीवे दैट्स गुड, नॉट एन इशू. सप्लाई आल्सो सेल बिलो फ्राइडे लो. भाई कोई भी फार्मा स्टॉक अपने पोर्टफोलियो में मत रखना. बीइंग वेरी क्लियर, डोंट बाय एंड कीप एनी फार्मा स्टॉक इन योर पोर्टफोलियो एवर. डोंट, इवन इफ यू सी एनी म्यूचुअल फंड, गो एंड सी देयर होल्डिंग. अगर उनके होल्डिंग के टॉप 10 में कोई फार्मा स्टॉक है, मत खरीदो वो म्यूचुअल फंड, क्योंकि फार्मा में कुछ पैसा नहीं बनने वाला है अगले 6-7 साल. और इज आल्सो लो बिलो फ्राइडे लो, सब साला चल रहा है. फार्मा क्या बनाना हो गया. अभी दो डाउनलोड कंसोलिडेशन कैडिला सेम, ये भी हमने यहाँ पे सेल किया था, अभी तक चल रहा है. इसको भी रखे रहो, सेल कर, मतलब नया शॉर्ट भी ले सकते हो फ्राइडे लो के नीचे. और छोड़ दो, बायोकॉन छोड़ दो. लुपिन जैसा कोई बड़ा टारगेट वाला है, कोई दिख रहा है? यार वो बड़ा पता पहले थोड़ा ना पता रहता है, बट इन जनरल वो तो ट्रेल करते रहो. अब जैसे यही है बायोकॉन, अगर ये भी ट्रिगर डाला है, इसके नीचे जाता है तो ये फिर ये भी आएगा 350 तक. वो बहुत बड़ा लॉट साइज, बहुत बड़ा है उसका. हाँ
अपोलो हॉस्पिटल भी गाइस सेल होगा फ्राइडे लो के नीचे। थोड़ा इसमें कॉशियस रहना क्योंकि बहुत वोलाटाइल है, तो इसमें स्टॉप लॉसेस बड़े जल्दी हिट हो जाते हैं, सो जस्ट बी कॉशियस ऑफ दैट। एल्केम भी हमने कब से सेल किया है, यहाँ से सेल किया है, ये भी ठीक है। एल्केम यहाँ पे बुक करेंगे 3265 के बाद, इफ एनीवन इज होल्डिंग विल बुक हियर समवेयर अराउंड 3260 3265। ओके, विल कंटिन्यू टू रिमेन शॉर्ट। एफएमसीजी में ट्रेड्स नहीं मिलेंगे ज़्यादा। देखो ये सारे डाइसी ट्रेड्स हैं, क्योंकि अब देखो दिस इज अ सेल बिलो फ्राइडे लो, बट जस्ट लाइक नेशनल एल्यूमिनियम डिस्कस किया ना, दिस इज द डिमांड जोन। सो अनलेस यू गेट a follow through, this might very well end up being a trap कि एक नीचे गैप डाउन हो and then it goes up. Okay, so FMCG मोस्टली आपको सारे ट्रेड्स तो हैं, लेकिन सारे के सारे डाइसी ट्रेड्स हैं, so you will have to wait for the follow through in all of them. ठीक है, अब जहाँ रैम को भी देखो, दिस इज द लो। अब यहाँ किसके नीचे सेल करते हो एंड स्टार्ट रिवर्सिंग फ्रॉम हियर, जस्ट 10 पॉइंट नीचे गिर के, वेरी मच पॉसिबल। So again, FMCG, I'm giving trades, but yeah, just like metals, be a bit cautious. All of these are sell below Friday low. Okay. अरे बर्जर पेंट्स का क्लियर सेल हो सकता है ना? बर्जर नहीं कहाँ सेल है? बिकॉज सी अभी रिसेंटली अभी क्रूड ऑयल का प्राइस और तो तब तो सेल कर दिया था ना हमने, हाँ जब क्रूड ऑयल बढ़ा था तब हमने सेल किया था, ये आ गया वापस ऊपर जा रहा है, क्योंकि क्रूड इज आल्सो साइडवेज लाइक वी डिस्कस्ड, दिस इज आल्सो साइडवेज। श्री सीमेंट मैंने कब स्टार्ट कर रखा है, इसीलिए खुला हुआ था, बट एनीवे इसमें अभी फिलहाल कोई ट्रेड नहीं है। श्री सीमेंट मैंने नवंबर में शॉर्ट किया था, तब से मैं कैरी कर रहा हूँ, और नवंबर में मैंने इसमें लॉस भी बुक किया था। नवंबर एक्सपायरी में ये साला ऊपर चला गया था, इसमें लॉस बुक किया था। यहाँ वापस मैंने फिर दिसंबर शॉर्ट किया, दिसंबर में प्रॉफिट, फिर जनवरी में थोड़ा सा, फिर वापस मेरे को हल्का लॉस। अब यही होता है, कैरी करने में थोड़ा इश्यू होता है फॉर लॉन्ग टर्म, ठीक है। फिर वापस मेड बिग मनी, लॉस्ट स्मॉल मनी, मेड बिग मनी, लॉस्ट स्मॉल मनी। अगेन आई एम स्टिल शॉर्ट ओनली, लेट्स सी। Sorry, question था that Yeah. when you are saying that all these stocks where you see a higher return possibility, जैसे Lupin या कुछ हो गया, तो isn't it better to buy PE थोड़ा सा deep in the money because it gives us more ये तो holding पता power? नहीं रहता है ना, हाउ डू आई नो? अब जब तक, अब जैसे लूपिन था, मुझे थोड़े ना पता था लूपिन इतना गिर जाएगा, आई जस्ट नो इट विल फॉल। Right. ठीक है, ये जब ब्रेक डाउन हुआ इस लाइन का, सो आई टुक शॉर्ट, ओके, बट इट कुड हैव स्टॉप्ड हियर, इट कुड हैव स्टॉप्ड हियर, डिडंट। तो फिर So जैसे how आप do होल्ड I करके know? रखे हो Lupin, एग्जैक्टली, मतलब मुझे पता थोड़ा ना था कि मुझे 900 पुट खरीदना है, क्योंकि मुझे पता है कि हाँ चलो 900 पुट इन द मनी हो जाएगा, या ये 850 हो जाएगा, आई नेवर नो दैट। नहीं तो जैसे सर अगर आप होल्ड करके रखे हो तो आई वांट टू नो दैट लाइक आपने क्लाइंट्स को भी वही बोला था होल्ड करने, सिंस आई एम इट्स माय फर्स्ट डे, सो नहीं, see, to people in the group, I am very clear with them in one thing कि you should expect your returns. You don't say this कि लूपिन लोगों ने इतना, like I said ना, मुझे नहीं लगता किसी ने होल्ड किया होगा, that is very true, and like right, someone said also, see, if you are having one lot, two lot, or correct, your capital is 5 lakh, 6 lakh, I don't expect you will hold all this. हाँ, Okay, probably and if right, you are right. actually holding all this, then you are trading wrong, because you are trading on luck. Then अगर आप एक लॉट खरीदने में अराउंड आपका 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख डिपेंडिंग ऑन स्टॉक लगता है, तब अप टू 7 लाख, ठीक है, ऑन एन एवरेज अगर आपका 3 लाख रुपए लग रहा है एक लॉट खरीदने में, तो यू शुड एक्सपेक्ट कि हाँ 25-30 हजार, 40 हजार अगर प्रॉफिट बन जाए, यू शुड एग्जिट, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। देयर इज नो पॉइंट होल्डिंग बियॉन्ड दैट, बिकॉज
you don't have the holding capacity. You are holding, that is, you are just trying to ride the luck, and it might work sometime and sometime it might fail also very bad. So the idea is कि you should expect returns in according to your capital. अगर आपका capital 3 लाख 4 लाख 5 लाख है तो any trade you take, if you are making 15-20,000, make sure you minimum you take back 10,000 rupees out of that. कभी 30,000 25,000 प्रॉफिट में 10,000 तो लेके जाओ, yeah, because there is no point in trading. Because sir, I remember when I spoke to you on the phone, you said you would generally don't ask to buy options, maybe only in the 3rd and 4th week of the month where options are very cheap. Yeah, last week. You were जैसे अब this week में I can give some options to buy. right. Because अभी सारे cheap रहेंगे. So if I see some major breakdown and all, it's better to buy option because पैसा उसमें easily बन सकता है. Correct. एक और question था sir, since I had seen your Z कब put आपने जो बताया था, तो that was the last week call क्या जो आपने दिया था? Second last week में हमने लिया था. Okay, so why that exception that time? Because you saw something on Not the chart. exception, just broke a major support, that's why. Okay. And वहाँ पे 300 इसीलिए डाला क्योंकि 300 का पुट ऑप्शन 3 रुपए में मिल रहा था, 300 के नीचे तो जाना ही था, मेजर सपोर्ट ब्रेक हुआ था. दैट्स व्हाई द आइडिया वाज कि वो इन द मनी हो जाएगा. I always try to buy certain put options जो I feel कि by the expiry it will be in the money. Got it. हाँ, and risk reward is favorable because आप stop loss देते ही हो जो invariably छोटा होता है. So got it. ठीक है sir. BBL, Marico, FPL. Tower is also a sell below, Friday low. These will also be a sell guys below Friday low. Target lower end of this channel. पहला टारगेट आपका ये रहेगा, उसके नीचे लोअर एंड ऑफ द चैनल. पेज इज अ बिग स्टॉप, उस पे ध्यान देना. मार्केट ऑर्डर पे बाई सेल मत करना. ट्राई टू पुट अ लिमिट ऑर्डर इन सेल बिकॉज इजीली उसमें 500-600 पॉइंट का अंतर हो जाता है. Media will just see G and PBR. G is a sell below Friday low. We are already short on it, will remain short on it. PBR is also, we are already short on it, will remain short on it. New sell can also be taken below Friday low. Okay, so both G and PBR continue to remain short. New shorts can also be taken. Reality. IB real sell below Friday low. Godrej also a sell below Friday low. DLF is also a sell below Friday low. सर इसमें से बेटर ऑप्शन कौन सा लग रहा है, DLF या गोदरेज? डिपेंड्स, जिस समय सेल कर रहे हो तुम्हारा रिस्क रिवॉर्ड कैसा है. अब कोई चीज गैप डाउन हो गई तो फिर ऑब्वियसली उसमें तुम्हारा या तुम्हारा जिस कैंडल में ब्रेकडाउन मिलता है फ्राइडे लो में, वो कैंडल बहुत बड़ी है, रिस्क इज वेरी हाई, तो ऑब्वियसली दैट विल नॉट बी अ गुड ऑप्शन फॉर यू.
फाइनेंशियल्स में क्या चल रहा है, इसमें भी कुछ मिलेगा नहीं ज्यादा, सब साइडवेज ही मिलेगा। ये क्या है भाई, पिरामल? Piramal is a sell below Friday low, but it's a risky one. Okay, just keep this in mind. Not everyone can trade in Piramal, a very volatile stock. So if you don't have time to look around the charts, don't trade in Piramal. Yeah. सॉरी, क्वेश्चन था वापस। सो जैसे अभी आप HDFC का चार्ट देख रहे थे, सो व्हाई नॉट बाय ओवर देयर सिंस देयर आर ग्रीन कैंडल्स व्हिच इज Market texture is negative. I don't want अच्छा, to सो buy यू आर नॉट anything. लुकिंग एट एनी बायर्स राइट नाउ? Even if it is a buy, I'll be okay leaving it. ओके ओके। Where Shriram Transport Finance is a sell below Friday low. That's in finance. बाकी बचे फिनो स्टॉक देख लेते हैं। केमिकल मन तो कर रहा है सेल कॉल दे दूं, बट छोड़ देते हैं इसको। ग्लेनमार्क लास्ट वीक भी सेल था, अभी भी सेल रहेगा, कंटिन्यू दैट। ठीक है, I thought it should show some reversal from the demand zone, but इसने नहीं दिखाया, so we'll continue to remain short on it. Okay, Ambuja lower end of the channel, so wait on this. Let me keep this in more spread. ट्रिगर लगा दूंगा इसमें। इसमें पहले लगता है अगर पेट्रोनेट में भी लंबा सेल था, पता नहीं भी कितने लोगों ने होल्ड किया है, बट अगेन दिस इज अ सेल बिलो फ्राइडे लो। ब्रो पाई इंडस्ट्रीज का एक बार देखेंगे प्लीज। पाई में कुछ नहीं है, नथिंग। Pfizer, nothing. Torrent Pharma, nothing. Deepak Nitrite. Ding. Take that thing. Take that. Okay. That can be so. सारे लास्ट वीक सेल था, अभी भी सेल रहेगा बिलो फ्राइडे लो। और भी अगेन मस्ट सेल बिलो फ्राइडे लो। ये स्टॉक भी क्या गिरा है, इसको भी यहाँ सेल किया था, इसमें बहुत जल्दी निकल गए थे, तो मैं भी जल्दी निकल गया था। Manappuram will be a sell below Friday low.
City Union will be a sell below Friday low. That can also we are short. We'll continue to remain short. We can also take new short position below Friday low. So that's it, guys. Done for this week webinar. These will be your calls. Almost आज मैंने शायद कोई buy call दिया ही नहीं है. सर Yes. इंडियन होटल्स प्लीज अगर बता सकते हैं तो. Yeah. Tell me. इंडियन होटल्स का चार्ट सर. इंडियन होटल नहीं यार FNO बस. इंडियन होटल्स एफएनओ में है सर. ऐसा है क्या? तो मेरे में एडिट क्यों नहीं है? एक मिनट देखने दो. आपके चार्ट में ये लोग शायद ये अभी रिसेंटली पिछले 2-3 महीने में ऐड हुआ है, मे बी दैट इज व्हाई. क्या है उसको? हाँ सर इंडियन, शायद इंडियन होटल ही नाम है सर. नहीं आ रहा है. सर वो इंडियन के बाद स्पेस दे दो. आए ये राइट. चलो इसमें कुछ है भी नहीं. दिस इज इन और FNO सेगमेंट. मैंने तो कभी ट्रेड भी नहीं किया इस पे. वैसे एक और है IX भी आ गया FNO में. IX सोचो मैं कितना अपडेटेड रहता हूँ. मैं जितने से मेरा काम है ज्यादा चीजें जानने की मैं कोशिश भी नहीं करता हूँ. I never read news and stock related to especially. चलो ऐड कर लेते हैं इसमें क्या है. ये एक ऐड कर लेते हैं और तुम्हारा इंडिया होटल. देखो मैं गिन चुन के कुछ स्टॉक्स हैं जिन पे मैं ट्रेड करता हूँ. दैट्स इट. मोस्टली निफ्टी 50 के स्टॉक्स जो हैं. अब जैसे मेरा रेड लिस्ट है उसमें मैं खोलूंगा निफ्टी में जो मेरे रेड लिस्ट में आएंगे बस दैट विल बी ऑल्सो. देखो मेरे इसमें कितने ही हैं. 1 2 3 4 5 6 7. These are the 7 which I mostly trade. and बाकी जो रेड लिस्ट में है उनमें कुछ बहुत कम. Not all of them. So that's how I trade. I don't actually trade in most things. Anyway, so guys, then that's it for today. And just sit and watch these videos once. Okay, once I publish them, make your own trade plan. Select few stocks that you want to trade tomorrow and only trade in them. And always look at your own capital risk reward and not what everyone else is doing in the group. Everyone has their own way of trading. कोई कुछ ज़्यादा पैसे बना ले तो don't feel bad. You missed something. It's just because everyone's way of trading is different. ठीक है? Let's end this today's webinar. Enjoy. Take care. We'll meet not tomorrow. सर आप Bye, एक bye. ग्रुप पे Yeah. भी डाल देते हो ना वेबसाइट पे वेबिनार. हाँ वेबसाइट पे पड़ेगा 10 बजे तक आ जाएगा. ठीक है. थैंक यू सर. Thank you. Bye bye guys. Take care. बाय. हैव अ गुड डे. Bye, sir. Bye.